Hello everyone, a very warm evening to all, and I welcome you to the first class of our crash course, Maths crash course, chapter GST. Alright, so we know that exams are approaching. आ गया exams 17 February. Exams is from our 17th Feb, right? आ गया, and since it's approaching, you all must be ready for it, right? So I bought you what? Maths crash course. Yes. What are we going to do today? क्या क्या करेंगे? Theory. Yes. Most importantly, all up to the syllabus. Totally up to the syllabus करेंगे. And most importantly, PYQS. So this is very much important, right? PYQS करेंगे. Cause PYQS is the source to achieve good marks, in fact, I can say. All right, so let's start without further delaying. So what basically GST is? So GST, you all know the full form: goods and service tax. Yes, tax. पहले आता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. उसको रिप्लेस करके we have a single tax system, that is GST. Okay, so GST is actually nothing but a minimal tax that we pay to a government. Now who pays the tax? Tax actually pay कौन करता है? ठीक है. So if we are purchasing or the one having the product, the person having the product or tax service, अगर वो बंदा जो जिसके पास प्रोडक्ट है या वो बंदा सर्विस लेता है, that is the person who is going to pay the tax. Yes, okay, I hope you are clear with that. Okay, now what is GST? We've already discussed now. So GST, how many types of GST are there? So GST are basically of three types. तीन टाइप का GST होता है. So one is SGST, another is CGST, and the last one IGST. Okay. S, state GST, the tax paid to the state government. CGST, tax paid to the central government. IGST, tax paid to the central government again. Then तो मैं बोल रहा हूँ कि ये CGST जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है और IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस? चलो बात करते हैं आगे. ठीक है, बात करते हैं. चलो, इससे पहले लेट अस टॉक अबाउट SGST एंड CGST फर्स्ट. ऑलराइट, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज इन मालदा. एक बंदा है जो मालदा में है, ठीक है, एंड वन पर्सन इज इन हावड़ा में, ठीक है. वेयर इज इन मालदा इज इन वेस्ट बंगाल, एंड वेयर इज इन हावड़ा, इट इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल. नाउ दिस हावड़ा पर्सन इज परचेजिंग सम आइटम फ्रॉम अ मालदा पर्सन. जो बंदा मालदा में उससे कुछ आइटम खरीद रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो बंदा मालदा में है ही इज गोइंग टू पे द टैक्स. यस, ओके, यहां तक क्लियर है, बढ़िया. नाउ लिसन, नाउ लेट्स बी केयरफुल, नाउ लेट्स सी इट प्रॉपर्ली. जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो बाइंग एंड सेलिंग, जो मालदा वन इज सेलिंग, हावड़ा पर्सन इज बाइंग, वो हो कहाँ रहा है भाई? इट इज इन द सेम स्टेट. सेम स्टेट ट्रांजेक्शन में हो रहा है. सो here the transaction is between the same state transaction. Yes, so same state में जब transaction होता है, that kind of transaction is known as intra state transaction. Okay, whenever there is a transaction between the same state,
सेम स्टेट, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। नाउ दिस इज स्पेशल। ओके, अब ये जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जो जीएसटी होता है दैट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, दैट इज एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब है ये जो जीएसटी है, मतलब जो भी टैक्स बनता है वो कुछ अमाउंट जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, नाउ कितना अमाउंट? दिस जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि एसजीएसटी जो होगा वो ही सीजीएसटी भी होगा। ओके, जितना एसजीएसटी उतना ही सीजीएसटी। एग्जाम्पल से लेट्स से कि जो ये हावड़ा वाला बंदा था, वो सामान खरीद रहा है एंड ही इज पेइंग अ टैक्स ऑफ अमाउंट। ओके, वहां पर जीएसटी है लेट्स से 10%, जीएसटी है 10%। नाउ सिंस इट इज इंट्रा-स्टेट, प्लीज रिमेंबर द टर्म इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन। जो इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शन है हो रहा है यहाँ पर, दिस जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट मीन्स एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी and also which is equal to CGST. All right, CGST मतलब जितना एसजीएसटी होगा उतना ही सीजीएसटी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर है कितना जीएसटी? सो इन दिस केस सीजीएसटी इज 10% डिवाइडेड बाय 2 विच इक्वल्स टू 5%। एंड सेम केस सीजीएसटी कितना होगा? GST divided by 2, that is 10% divided by 2 which equals to 5%. So I hope you guys understood that, right? So GST, whenever there is intra-state transaction, SGST और CGST में split हो जाता है क्या? GST into equal parts. Clear? Okay. Next आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी में बात कर रहा था, आईजीएसटी भी क्या होता है भाई? आईजीएसटी द होल टैक्स इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी इन दिस केस जो ये सीजीएसटी होता है, इसमें से जीएसटी से आधा पार्ट जाता है सीजीएसटी को, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट इन केस ऑफ आईजीएसटी द होल जीएसटी goes to the गवर्नमेंट। सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। हालांकि कुछ ऐसा बोलने का बात है, बट सम अमाउंट इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, से एक बंदा है, लेट्स से देयर इज वन पर्सन इज इन लेट्स से दिल्ली, ओके, एंड अनदर पर्सन is in Mumbai. This Mumbai person is purchasing some item from a Delhi person. इसका मतलब he has to pay the tax. Now see carefully, Delhi, Mumbai, two different states. This is two different state. Yes or no? दो different state है. Yes? Okay. See, दो डिफरेंट स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो whenever there is a transaction between two different state, दो डिफरेंट स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन होगा तो वो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। Transaction between two different state, interstate, and in this case the whole GST is paid to the central government। हालांकि बोलने का चीज है, थोड़ा बहुत दिल्ली को मिलता है और मुंबई को भी मिलता है, ठीक है, बट थ्योरी, राइट? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते, चलो एग्जांपल
जैसे कि मुंबई पर्सन इज बाइंग और परचेसिंग सम आइटम, लेट्स से जीएसटी है यहाँ पर 20%। सो इन दिस केस जो जीएसटी होता है ना वो सारा का सारा कितना होता है, आईजीएसटी जो होता है ना, आईजीएसटी जो होता है वो भी 20% ही होगा, द होल जीएसटी, द होल जीएसटी। ओके, IGST is equal to GST only, IGST is equal to GST, जितना GST है वो ही। सो प्लीज रिमेंबर दिस, IGST and in this case GST is equal to SGST plus CGST, because we are going to do some questions related to this, ठीक है ना। SGST is equals to CGST, all right। चलो, now let's learn some basic about percentage। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, व्हाट डज एक्चुअली डिस्काउंट मीन्स? डिस्काउंट मतलब क्या होता है? प्राइस क्या होता है भाई? प्राइस डिक्रीज होता है, ऑलराइट। और टैक्स मतलब क्या होता है? प्राइस इंक्रीजेस, ओके, प्राइस इंक्रीज, इन दिस केस प्राइस डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक सामान मांगू, ओके, वन थिंग, एवरी आइटम, एवरीथिंग इज 100%। हर जो सामान होता है वो 100% होता है, 100%। मान लेते हैं कि ये केस में डिस्काउंट है, अगर ओके, जैसे कि मानते हैं कि जो डिस्काउंट पर्सन दिया हुआ है, द डिस्काउंट पर्सन जो दिया हुआ है, लेट्स से ओके 10% डिस्काउंट इज गिवन, मान लेते हैं। अगर 10% डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट देने के बाद सो प्राइस और अमाउंट विल सेट बेटर, ओके, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट को ही हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट को ही हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया इतना? बढ़िया। नाउ सी, जैसे कि यहाँ पर बोला है 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, सारा सामान 100% होता है, तो डिस्काउंटेड प्राइस परसेंट कितना होगा? डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा? डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा? अगर हम लोग से परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, देखो सामान था 100%, डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो माइनस कर लो ना, तो कितना आया? 90%। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू पे, हम लोग पे करेंगे बस 90% वैल्यू का, वी आर जस्ट गोइंग टू पे 90%। ओके, सो ये बेसिक बात है जो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे ये चीज़, ओके, जो डिस्काउंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आसान रहे क्वेश्चन करने में। अब नेक्स्ट, सेम थिंग विद टैक्स। टैक्स क्या होता है भाई? प्राइस बढ़ता है, इन टैक्स प्राइस इंक्रीजेस। सो लेट्स से मान लेते हैं कि टैक्स है 20%, टैक्स कितना है? 20%। नाउ आई टोल्ड यू कि एवरीथिंग इज 100%, आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज 100%, yes, okay। now so price after tax टैक्स कितना लगा है भाई? 20%। सामान कितना है हम लोग का? 100%, यस। तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या से करेंगे हम लोग? ओके, तो प्राइस आफ्टर टैक्स कितना होगा? टोटल तो 100% है ना, और हम लोग 20% भी दे रहे हैं, तो प्राइस आफ्टर टैक्स कितना होगा? 120%। 120% होगा टैक्स। दो क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चलो लेट्स नॉट टेक दिस, तुम लोग के जिस को लाइक इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म, एमसीक्यूज में बहुत काम लगता है, जैसे कि आई गिव यू वन एग्जांपल, ओके। से जैसे कि मान लेते हैं कि एक सामान का दाम है, लेट्स से कॉस्ट प्राइस, लेट्स से
cost price is rupees, let's say 400. Okay, cost price is rupees 400, and in that case tax, in other words GST, here the tax means nothing but GST, keep in mind. So here GST is, let's say 20%. now I haven't told that this is interstate or intrastate, बस GST, okay, टैक्स पे करना है. So यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा what is the price of final price. So whenever we are talking about final price, we are talking about price including GST. प्राइस इंक्लूडिंग GST. ये करने का दो तरीका. पहले क्या होगा, पहले GST निकाल लो. ओके, पहले GST निकाल लो. जैसे कि मान लो पहले GST निकालो. चलो पहले इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. ओके चलो. सो प्राइस आफ्टर टैक्स. पहले चलो, पहले जो लॉन्ग मेथड होता है, जो बेसिक टाइप होता है, उसको कर लेते हैं. चलो, जो बेसिक होता है वो वाला, जो पहले GST निकालना फिर उसके बाद GST ऐड करना, वो काम कर लेते हैं. जो बेसिक होता है ना, सारा लोग करते हैं वही करते. चलो पहले वो केस से करते हैं, ठीक है. उसके बाद जो मैंने तुम लोग को सिखाया वो तरीका से, what is the difference is actually it saves a time a lot, बहुत टाइम बचाता है. चलो पहले चलो ट्रेडिशनल वे. ओके, ट्रेडिशनल वे पहले GST निकालते हैं. सो GST इक्वल्स टू, GST कितना परसेंट बोला, 20%. सो GST निकालने का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस. यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सो कॉस्ट प्राइस का 20%. सो परसेंट कॉस्ट प्राइस इंटू GST परसेंट. ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 400 and GST is 20%. So we know when we remove percentage, we divide it by 100. So 100 and 100 got cancelled, 0 and 0 got cancelled, sorry. So 4 2 times is 80 rupees. So जो बंदा कॉस्ट प्राइस 400 रुपया था, उसमें GST कितना है भाई, 80 रुपीज. ओके, नाउ सो प्राइस इंक्लूडिंग जो GST होता है, that is cost price. If cost price is given, then we'll write cost price. If mark price is given, mark price. Discount there, I'll come to that thing also. Okay, so cost price plus GST. Cost price kitna hai? It is 400. What is GST here? 80 rupees. Hence the total payable amount is 480, and that is including GST. Clear hai ba? Okay, now we were talking about discount. Yes, so whenever discount is given, what is given here? Discount is given, GST is given. अब पहले कौन लगता है भाई, कौन लगता है पहले, तो पहले कौन लगता है, ऑलवेज पहले डिस्काउंट. पहले we have to calculate the discount. That means we have to calculate the discounted price. Then we have to add the GST. We have to apply discount first, followed by GST. सबसे पहले डिस्काउंट करो, उसके बाद करो क्या, GST. मतलब क्या, एक क्वेश्चन करते हैं. देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल से, जैसे कि मान लेते हैं एक प्रोडक्ट, डिस्काउंट क्या में होता है भाई, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में होता है. सो एक प्रोडक्ट है जिसका मार्क प्राइस है रुपीस, मान लेते हैं. ओके, कितना, 500 मान लेते हैं, 500. ओके, चलो 500. ओके, नाउ इट इज सेड दैट प्रोडक्ट में डिस्काउंट दिया हुआ है, जो दुकानदार था, जो डिस्काउंट दिया हुआ है 20%. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट द GST चार्जेस 10%. GST चार्जेस 10%.
ऑल राइट, ओके। तो सी हियर, अब हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है फाइनल प्राइस। क्या निकालना है हम लोग को, लेट्स सी फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग, ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी जीएसटी लगा के हम लोग का फाइनल प्राइस कितना दे रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज गिवन, discount is given. So if discount is given, we have to first of all find discounted price. Discounted price, see here, discount 20% दे रहा है, तो कितना का पैसा पे कर रहे हैं, we are just paying 80%। कितना का पे कर रहे हैं हम लोग, 80% का पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस सीधा निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, मार्क प्राइस इनटू 80% का पे कर रहे हैं ना, परसेंट मतलब बाई 100। 0 0 गॉट कैंसल, 2 0 गॉट कैंसल, आया कितना, 400 रुपया। तो ये है डिस्काउंटेड प्राइस, तो ये है डिस्काउंटेड प्राइस। और जीएसटी हमेशा क्या में लगता है, अगर डिस्काउंट दिया हुआ है, इफ डिस्काउंट इज गिवन, जीएसटी इज ओनली लायबल इन डिस्काउंटेड प्राइस। मतलब वी हैव टू फर्स्ट अप्लाई डिस्काउंट, देन वी हैव टू अप्लाई द जीएसटी। Alright, this is discounted price. Now GST निकालते हैं, ओके चलो GST निकालते हैं। सो यहाँ पर GST है कितना, 10%, ओके 10%। चलो वही ट्रेडिशनल मेथड। तो GST कितना है भाई, 50 रुपीज। नाउ व्हाट इज द फाइनल प्राइस, सो फाइनल प्राइस इज डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंटेड प्राइस ही लगेगा। हम लोग 400 रुपया पे कर रहे थे बिना जीएसटी का, एंड प्लस जीएसटी, सो दैट इज 450 प्लस 400 ना, नॉट 450, 400 प्लस 50 दैट इक्वल्स रुपीज 450। दैट मीन्स जो सामान दैट मीन्स जो सामान 500 का था उसमें 20% टैक्स लग के, 20% डिस्काउंट लग के, एंड आफ्टर 10% टैक्स वी आर पेइंग अमाउंट ऑफ 450 रुपीज। क्लियर? सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग। सो दीज आर व्हाट द थिंग्स दैट यू हैव टू सी। ओके नाउ चलो विदाउट फर्दर डिलेइंग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत आसान सा क्वेश्चन, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस बोला है, मार्क प्राइस डिस्काउंट इज गिवन। से डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया हुआ है। सो सबसे पहले अगर डिस्काउंट दिया हुआ है देन वी हैव टू फाइंड व्हाट, डिस्काउंटेड प्राइस ऑब्वियसली। सो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं। आई एम राइटिंग डीपी, डिस्काउंटेड प्राइस। सी हियर 10% डिस्काउंट है, दैट मीन्स हाउ मच वी आर पेइंग, we are paying for 100 minus 10%, that is we are just paying for 90%। 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 90% पे कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्काउंटेड प्राइस मार्क प्राइस into 90%, percent means divided by 100, got cancel, this is 4500, this is our discounted price। Now if you'll see the question again, if you'll say GST of 12% is given, 12% दिया हुआ है जीएसटी। यस, सो नाउ लेट अस फाइंड द जीएसटी। जीएसटी कितना है, 12%। क्या में लगता है, डिस्काउंटेड प्राइस में लगता है, नॉट इन मार्क प्राइस। अगर डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस में नहीं लगेगा, डिस्काउंटेड प्राइस में लगेगा। इफ मार्क प्राइस दिया हुआ है एंड देर इज नो डिस्काउंट, दैट मीन्स जीएसटी विल बी लायबल इन मार्क प्राइस ओनली। इन दिस केस डिस्काउंट इज गिवन, so we have to apply GST in discounted price only। so GST कितना है, 4500, discounted price into GST कितना है भाई, 12%, percent means divided by 100, so 20 got cancelled, 12 4 times, this is 540, 540 रुपये GST। पूछा क्या है, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। वेरी केयरफुल, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, आई होप यू नो दैट। इंक्लूडिंग मतलब जीएसटी डाल के, एक्सक्लूडिंग मतलब विदाउट जीएसटी। क्लियर? ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी। नाउ सो अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, सो क्या होगा भाई, हम लोग कितना पे कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस,
4500 कितना जीएसटी पे कर रहे हैं 540 which amounts to how much this 510 5040 is the answer and the answer is option number A. ऑप्शन नंबर ए 5404. आई होप यू गाइज आर क्लियर. अगर क्लियर नहीं हुआ कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हियर इंस्टेड ऑफ यहां पर सी दिस क्वेश्चन. यहां पर ना मार्क प्राइस बोला है ना कॉस्ट प्राइस बोला है. यहां पर सेलिंग प्राइस बोला है. कितना है भाई? सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी. मतलब क्या? जीएसटी लगा नहीं है. दैट मीन्स यू कैन ट्रीट दिस एज मार्क प्राइस ऑल्सो कॉस्ट प्राइस ऑल्सो. यू कैन ट्रीट सेलिंग प्राइस. ओके नाउ और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%. व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द शर्ट हियर? टोटल प्राइस. टोटल प्राइस मीन्स इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग व्हेन यू हियर टोटल मीन्स इंक्लूडिंग. इंक्लूडिंग जीएसटी. ये पूछ रहा हम लोग को. वेयर आस्क्स दिस. Clear? Okay, let's do it. So including GST. Okay, 800 rupees. You guys can easily do it. So पहले GST निकालते हैं. So 800 into 12%. Percent means divided by 100. Got 0. 8 2 16 96 rupees. GST is 96 rupees. Then the total price of the shirt पूछा है. So total price that is including GST कितना होगा भाई? So it is selling price. In this case selling price is given, so I am writing selling price. अगर यहाँ पर mark price देता तो मैं mark price ही लिखता. So selling price plus GST. What is selling price here? Selling price is 800. What is GST here? 96, which is total of 896, and the answer is option number C. Okay, let's move to the next part now. Next question. Now see here, यहाँ पर क्या बोला है? Printed price. जी see printed पता होगा ना. प्रिंटेड है जो भी है ये प्रिंटेड मतलब वही है. मार्क प्राइस का ही बारे में बात हो रहा है. प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस ही है. प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस ही है होता है. मार्क प्राइस अभी तो किए ये क्वेश्चन. सो आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन. ओके तो यहां पर सिर्फ क्या पूछा है? इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 10% देन जीएसटी चार्ज. सी सिर्फ जीएसटी पूछा है. ओनली जीएसटी इज आस्क्ड, नथिंग एल्स. So I hope you guys can do this question. So कर लेना ये question please. Next. Okay, the next question. Number 4. Intrastate sale. Intrastate मतलब क्या होता है भाई? Same state में हो रहा है. Same state. Okay, Delhi to Delhi, Mumbai to Mumbai, Bengal to Bengal. Yes, Hyderabad to Hyderabad, Chennai to Chennai. ये transaction हो रहा है. So in this case, what is given? Let us read. CGST is given. Central government, okay, कितना रुपया? 120 rupees. CGST. Now just now we have learned. See, in this case, see, CGST and SGST, and we know that CGST is equals to SGST. हमेशा याद रखो कि SGST and CGST always comes together. SGST and CGST always comes together. Keep in mind. Okay. चलो करते हैं ये क्वेश्चन. Okay. Now in this question it is said that CGST is 120. So can I say that SGST is also 120 rupees? SGST is also 120 rupees? Now we know that SGST and CGST अगर मैं दोनों को ऐड करूं then what I'm going to get? I'm going to get GST here. Okay, so SGST is 120 rupees and CGST is also 120 rupees, so which equals to 240 rupees. So this is our GST. So GST charge is 240 rupees. Yes. Now if the mark price of an article is 2000 rupees, find the rate of GST. Rate of GST. अगर जीएसटी का रेट पूछा है ना तो जीएसटी निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है. यस, जीएसटी निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है. सो जीएसटी इक्वल्स टू मार्क प्राइस इज गिवन, सो मार्क प्राइस इनटू जीएसटी परसेंट डिवाइडेड बाय 100 ये होता है. सो जीएसटी कितना है? जीएसटी इज 240. सो 240 इक्वल्स व्हाट इज द मार्क प्राइस हियर?
2000, what is the GST percentage, वही तो निकालना है, परसेंट डिवाइडेड बाय 100, 0 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, 20 उधर चला जाएगा, so it will be GST percent equals to 240 divided by 20, 0 and 0 got cancelled, 20 12 times, that is 12%. So the answer is option number C. Clear? Next, number 13, same question. See, mark price CGST 4%, in this case 4%, it is not given the amount, in this case percentage is given, so CGST is 4%. So what I can conclude, guys, so I can say that SGST is also 4%. That means GST equals to SGST plus CGST, which equals to 4% plus 4%, which equals to 8%. मतलब GST है 8%. Now, then price of article including GST, you are asked final price, total price. Yes, then what we need to find, we need to find GST now. So GST निकालते हैं. So GST equals to mark price, that is 1375 into GST percent, 8%. 8% means 8 divided by 100. Now easily you can do it 4 2 times and 4 25 times, 5 5 times and 5 2 times, 5 7 times, 5 5 times, 5 5 times, 5 5 times, 5 cancel out. तो बचा कितना भाई, 55 into 2, which equals to 110 rupees. So this is the GST charged. Yes, but we are not asked GST. ये 110 मार्क मत कर देना, GST नहीं पूछा है. What is asked? The price of article including GST, ये पूछा है. So price of article including GST क्या होगा? So that will be mark price plus GST. So mark price is 1375 plus 110, which equals to 1485. Option number D is the answer. Next question. Okay, all right. An article which is marked at 1200 available at a discount of 20%. देखो 20% GST discount दिया है, 18%. Same, I think this is same as question number 1. Same as question number 1. So I want you guys to do by yourself. Okay, I want you guys to do by yourself. ठीक है, कर लेना ये क्वेश्चन. ठीक है, okay, let's move to the next question. Okay, थोड़ा चार्ज डाउन हो गया, रुको एक मिनट. इतना जल्दी बैटरी ड्रेन हो जाता है. Okay, next. Now we are starting with the word problems. Very simple, very easy, बहुत आसान. कहीं पर डिस्काउंट, कहीं पर नो डिस्काउंट. ओके, से सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन. Now if you will see, in this case 3 different commodities or product is given. What are those? Medicine, shoes and bag, with different GST. And in this case of laptop, discount भी दिया हुआ है. What is asked? Calculate the total amount of GST. मतलब मेडिसिन का GST प्लस शू का GST प्लस लैपटॉप का GST. And in the case, total bill amount including GST paid by Vedi. Okay. First, let us find GST of medicine. मेडिसिन का GST ढूंढते हैं. So GST कितना है भाई मेडिसिन का? So it is 950 into 5%. So 5%, 0 and 0. Okay, got cancelled. 5 5 40 25 2 carry 45 47 47.5. This is GST of medicine. All right. Next, shoes. For shoes, GST is 3000 into 18%. So it equals to, it is 540 rupees. Yes.
3 8 times 4, 540 rupees. And the last one, that is laptop bag. So for bag, see carefully, bag 1000 रुपया का है, but discount 30% is given. Yes. So 1000 रुपया, पहले तो डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं, डिस्काउंट दिया हुआ डिस्काउंटेड प्राइस. सो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा 70%. सो 1000 into 70% means obviously when you cancel it you are going to get as 700. So ये डिस्काउंटेड प्राइस में ही क्या लगता है भाई, जीएसटी. लेट अस फाइंड जीएसटी नाउ. सो जीएसटी इक्वल्स टू 700 का 18%. All right. So 7 8 times is 56 and 7 1 times is 7 plus 5 is 12. So amount is 126. So according to question number 1, क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड. कितना अमाउंट है, सिर्फ जीएसटी पूछ रहा है, नथिंग एल्स. सो टोटल जीएसटी पेड इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, बस ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, दोज आर व्हाट, जीएसटी. ये तीनों अमाउंट ऐड करेंगे. व्हाट इज दैट, 47.5 540 plus 126. 5 times 13 3. So यहाँ पर डेसिमल आएगा. Yes, 9 10 11 5 6 713 रुपीज. So इसका आंसर क्या होगा भाई, 713.5 रुपीज. ओके, द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी. सो पहले बिल निकालते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी. सो टोटल बिल एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो है क्या चीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब वही चीज जो सिर्फ हम लोगों ने क्या लगाया, दाम लगाया. जैसे कि मेडिसिन का 950 रुपीज, शूज 3000, बट लैपटॉप का नॉट 1000, लैपटॉप इज 700 रुपीज. ओके, वाई, डिस्काउंट दिया ना. सो इट इज 950 plus 3000 for shoes and 700 for bag. So it is 0564. This is total bill excluding GST. Now the final one, total bill including GST. So that is this amount and the total GST. Okay, so that is 4650 plus 713.5. Answer is 53613.5. So this is the final answer. Okay, next question, number 8. So in this case यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं है भाई, बस टेबल बनाया है और कुछ नहीं. हेयर ऑयल 1200, जीएसटी 18% and discount. In this case discount is given in terms of amount, not percentage. Cashew nut 600, excuse me, and your rate of GST is 12%. Clear? करते हैं क्वेश्चन, very simple. Okay, say hair oil क्या निकालना है, जीएसटी पेड. सो सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे. बट इफ यू विल सी इन केस ऑफ हेयर ऑयल डिस्काउंट इज गिवन. सो व्हेन डिस्काउंट इज गिवन, डिस्काउंटेड प्राइस निकालते. सो डिस्काउंटेड प्राइस इज 1200 minus 100 which equals to 1100 rupees in this case. Yes, for whom, for hair oil. Number 2, no discount. Yes, अब क्या पूछा है, जीएसटी. इसका जीएसटी, हेयर ऑयल का जीएसटी, हेयर ऑयल
GST निकालते हैं. So GST is lived in discounted price. So 1100 into 18%. 891 198. 198 is the GST. Clear? Okay. Now listen कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, sometimes give a pause, try doing by yourself, then look at to my process. मेरा प्रोसेस देखो. ओके अगर आंसर मैच हो वेल एंड गुड, वेरी गुड. अगर आंसर मैच नहीं हुआ जस्ट गो थ्रू इट, कहाँ पर मिस्टेक है. ओके समटाइम्स सिली मिस्टेक, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन, वेरी सिली मिस्टेक will not get you to the answer. All right, so very careful with that. Okay, now okay, hair oil. Now for cashew nut. Cashew nuts, इसका GST निकालो. Let us find the GST. That's 12%. So 600 into 12%, we get this as 72 rupees. So this is the GST. Yes. Now what is the total GST? So total GST is 198 plus 72 rupees. So 198 plus 72 rupees, which equals to 270 rupees. So this is the GST. Now next क्या पूछा है? टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST. टोटल बिल अमाउंट तो यहीं पर कर देता हूँ एक साइड में. ठीक है, अभी थोड़ा इसको छोटा ही कर देता हूँ पहले. ओके ज्यादा ही छोटा हो गया ना. ओके नाउ द लास्ट वन, टोटल बिल अमाउंट. तो टोटल बिल अमाउंट मीन्स हेयर ऑयल का पहला एक्सक्लूडिंग GST. ओके टोटल बिल एक्सक्लूडिंग GST कितना है भाई? सो 1100 प्लस 600, that is 1700. Now next including GST. So number B including GST. Number B including GST. So that is 1700 plus 270, which equals to 1970 rupees. Clear? So this is the final answer. Okay, any doubt? Okay, so I want you to do this question. Okay, पहले खुद ट्राई करो. Okay, उसके बाद see my process. All right. Okay, give a try first. Okay, now in this question it is said that laddu costs 500 per kg. बंदा ने 2 kg लाया, GST 5%. Pastries 100 per kg. Okay. Little mistake in the question. Little printing mistake. It is not 100. Okay, it is not 100 per kg actually, not 100 per kg. So it is 100 per piece. 100 per piece. Okay, all right. Laddu 500 bought how many kgs? So cost of laddu it is 500 into 2 kg, which is rupees 1000. Cost of pastries it is 100 into 12, that is 1200 rupees. Okay, now लड्डू में GST लगा. Let's calculate the GST. 5% GST is levied on that. So 1000 का 5% कितना होगा भाई? It is 50 rupees. Yes, and pastry 18%. So 1200 into 18%.
So it is 12, 8 times 8 to 16, 96. 96, 12 8 times is 96, and 12 1 times is 216 rupees, right? Isn't it? 12 into 18 is 1200, 216. Okay, all right. So this is the GST in laddu and pastries. Now what is the total GST? So total GST is 50 plus 260, which equals to 276, sorry, 266 rupees. All right, 266 rupees. Okay. Okay, now what is the total bill including GST? Please do this question. अब ये क्या करना है तुम लोगों को? लड्डू का कितना प्राइस लगा? 1000, और पेस्ट्री में कितना लगा? 1200, and plus GST will give you total bill amount. Okay, next question. So again the same thing, GST quantity is given, so do this question by yourself. आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है. Do this by yourself, okay, as your homework. Next question. Next, okay, question number 11, and most probably this is the last question of this chapter. And whatever this जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ, this is all past year question जो बोर्ड्स में आया है एक्चुअली, and this question is from the latest specimen 2026 बोर्ड के लिए जो स्पेसिमेन आया वहां से उठा के लाया हूँ. ठीक है, सी द क्वेश्चन. ड्राई फ्रूट 1200, ड्राई फ्रूट 1200, 100 as your, this is the discount. Okay, यहाँ पर डिस्काउंट भी प्रिंट हो गया. दिस इज डिस्काउंट. डिस्काउंट इज 100 रुपीज इन केस ऑफ ड्राई फ्रूट. रेट ऑफ GST. ओके, तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या पूछा है? टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग GST. सो टोटल अमाउंट, टू फाइंड टोटल अमाउंट क्या करेंगे? पहले GST निकालेंगे. सो डिस्काउंट दिया तो पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे. सो फॉर ड्राई फ्रूट, dry fruit, so what is discounted price? It is 1200 minus 100, which equals to rupees 1100. Rupees 1100. Now for packed wheat, no discount is given. Yes, okay, इसका भी GST निकाल लेते. चलो, GST is 1200, so 12%, sorry, GST into 12% got cancelled. So this is 231, 100 and rupees 132. Okay, next, for packed wheat, GST कितना होगा इसका? GST is 286 into 5%. चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते. 5 6 times is 30, 5 8 times is 40, 3 4 carry, 5 2 times is 10, and 40. So this 2 zeros, that means rupees 14.30. Okay, 5 6 times is 30, 43, 2 times 10, 14. Okay, packed with. Now for bakery product, bakery 500, discount is 10%, so discounted price is 500 into 90%, that is 450 rupees. What is the GST here? 12%, so 450 into 12 by 100. 0 and 0 got cancelled, so 5 2 times, 5 9 times, 2 6 times, 9 6 times is 54 rupees. So this is the GST on bakery. All right, now क्या पूछा? Total amount. So what is the total amount? Total amount is 1100 plus 286 for wheat and 454
the bakery item. This is 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1836. So now this is excluding GST. Now including GST क्या करेंगे हमने? Okay. Now including GST क्या करेंगे हम लोग? So this is 1836 plus GST. What is the total GST? Let us find the GST first. 132, 14.30 and 54. That is 132, 14.3 and 5454. 8, 10, 3, 5, 6, 3, 10, 200.3. Alright, 5, 1, 6, 3, 9 plus 1, 10, 203. So this is 200.3. So answer is 3.631. So answer is 236 for including GST. Okay. So that's all for today. Okay. And what are the key takeaways? So you have to go through all the, not say formula, basic things I have given you. Basic things. Solve the given question. Solve questions given. Okay. Ask any doubt, if any. Okay, I'll solve it as soon as possible. Okay. And please practice the question. If there is, practice all. अगर कोई doubt है, then practice it. Okay. So thank you for watching. I hope you like this. Okay, I hope you have learned many things from this. Revision अच्छा हुआ होगा. I hope so. Okay, and please do share, and I'll see you in the next class. Okay, thank you.